Welcome to our channel English with PK99. If English is perfect, confidence will be perfect. If English is perfect, of course, career will be perfect. And if English is perfect, personality will be perfect. That's why our English will be very perfect. लेकिन आज का वीडियो है थोड़ा स्पेशल. My dear students and my dear friends, आपने देखे होंगे कॉमन लैंग्वेज कास्ट, ऑफ कोर्स कॉमन इंप्रेशन. एक एक्सप्रेशन है आई एम सॉरी. अब देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड का एलकेजी यूकेजी का बच्चा ही बोलता है आई एम सॉरी, और बड़ा होके जो बच्चा और सपोज एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट आल्सो और बड़े लोग भी बोल रहे हैं आई एम सॉरी. तो व्हाट इज द अपग्रेड? बात वो नहीं है सॉरी इज ऑलवेज सॉरी, लेकिन हम थोड़ा सॉरी को अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे. क्या होता है, कॉमन इज ऑलवेज कॉमन, हर कोई यूज कर रहा है सॉरी सॉरी, लेकिन हम कुछ अलग एक्सप्रेशन करेंगे. एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अपग्रेड द एक्सप्रेशन आई एम सॉरी. ऑफ कोर्स गलती होने के बाद हर कोई बोलता है सॉरी, लेकिन हमारा सॉरी थोड़ा अलग रहेगा, इसलिए सामने वाले लोगों को जो भी सॉरी एक्सेप्ट कर रहा है ही और शी विल फील वेरी बेटर. दैट्स व्हाई आवर सॉरी इज वेरी डिफरेंट. गॉट इट? सो आई एम सॉरी is a very common expression. Generally we commit something or we commit any wrong or did any wrong, so that time we say I am sorry. बट ए सॉरी हमारा ऐसा रहेगा कि सामने वाले को अच्छा लगेगा और वो हमें माफ कर देगा. सो in this video we are going to study certain expression parallel to or alternatives to I am sorry. तो उसमें पहला एक्सप्रेशन है प्लीज पार्डन मी. गलती होने के बाद आई एम सॉरी की बजाय प्लीज पार्डन मी. लोग राइस खाते तो हम जीरा राइस खाना चाहिए मीन्स अपग्रेड होना चाहिए. लोग दाल खाते हम दाल तड़का. यस, जस्ट इट्स अ फनी एग्जांपल, बट आई एम जस्ट टेलिंग वन एक्सप्रेशन. सो हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा अलग होना चाहिए एंड पीपल ऑल्सो फील दैट वी आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. And that's why we are upgrading our language. And of course I am sorry upgradation first है please pardon me. So ये पहला हो गया. Next one I beg your pardon, थोड़ा सा और upgrade. I am sorry, no, I beg your pardon. Correct? It looks more better again. Next one, it's all my fault, please pardon me, it's all my fault. सामने वाला एक झटके में हमें माफ कर देगा because our expressions are polite and full of manners. and आपको तो मालूम है manners make a man. Correct? Manners make a man. That's why these are expressions, you know, they cast very good impression. Next one, I am sorry from the bottom of my heart. और थोड़ा सा upgrade. I am sorry from the bottom of my heart. देखो वही बात है, लेकिन थोड़ा सा हमने उसको अपग्रेड किया. आप देखेंगे बहुत से लोग एंटर करते वक्त, क्लास में एंटर करते वक्त, मैं कम इन सर, थोड़ा सा और अपग्रेड, एक्सक्यूज मी, मैं कम इन सर, थैंक यू सर, एक्सक्यूज मी, मैं डिस्टर्ब यू. थोड़ा सा और अपग्रेड क्या रहेगा, एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड मैं डिस्टर्ब यू. सो upgradation is very must. If we don't upgrade, we should suffer downgrade. That's why we should upgrade. And today we are going to upgrade the expression I am sorry. इसके बाद का एक्सप्रेशन रहेगा I sincerely apologize. I sincerely apologize. So it looks very good. I am sorry नहीं, I sincerely apologize. I sincerely apologize for my mistake. I sincerely apologize what I did. Correct? Next one, I owe an apology. Please forgive me. I owe an apology. मैं आपकी माफी मांगता हूं और मैं आपके माफी का हकदार हूं, जो भी है. I owe an apology. So I am sorry. These are the expressions. These are the upgradation for I am sorry. Next one, ever so sorry. Ever so sorry. Please forgive me, pardon me. Ever so sorry because I committed one mistake or I committed this mistake. Correct? Next one, pardon me is repeated, sorry, by mistake it is repeated. So they are the beautiful expression for I am sorry. First, pardon me. Second, I beg your pardon, something upgrade. After that, it's all my fault. After that, I am sorry from the bottom of my heart. Good English cast good impression. And that's why we should always upgrade our language, because upgradation or improvement has no end. Constantly we should upgrade. That's why I told you, if we don't upgrade, we should tolerate downgrade. Okay? बाद में रहेगा I sincerely apologize. I am sorry के बजाय I sincerely apologize. Next, I owe an apology. सामने वाले का गुस्सा इमीडिएटली चला जाएगा, जाना भी चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा पोलाइट एक्सप्रेशन यूज किया है. करेक्ट? नेक्स्ट वन, एवर सो सॉरी. It looks nice again. Ever so sorry. Next one, please pardon me. So it is repeated. So they are the beautiful expression for good English, and of course, good English cast good impression.
means I am sure that you may have like all the expression because they are the abbreviations for I am sorry. More English or a beautiful English cast beautiful impression, and that's why we should be always ready to upgrade our language. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे विदाउट हेजिटेशन. You should write in comment box. All suggestions are welcome, and I am thankful to you. But don't forget to subscribe our channel, share such type of videos to students so that such videos, they train their brain for good manners. Meanwhile, I take your kind leave. Have a great time. Bye bye.